तो तू सिर्फ पूरी टाइम जिंदगी अपना बॉडी बनाया बट कल को देखे भाई तेरा कोई एनिमी ही नहीं है, तू बचाए किसके लिए भाई? तेरे से लड़ेंगे क्यों लोग? तू तो थ्रेट है ही नहीं ना भाई, तेरे एनिमी ही नहीं है क्योंकि तू तो साला वही है ना भाई। यार ठीक है, बॉडी चल साइडर ब्रो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर? How would you think you would develop enemies? How would you think you would have enemies? You won't have enemies if you're not doing anything monumentally great, bro. If you're just like normal shit, a normal average guy, you think you would have enemies? Oh, अपनी एनर्जी, अपना फोकस जो है ना भाई, अपनी स्किल्स के ऊपर लगा। अगर तेरी स्किल्स दूसरा बंदा भी सीख सकता है तो वो तेरी स्किल्स है ही नहीं भाई। मैं बोलता हूँ कि ब्रो उसको बोलो ही कि नहीं, बोलो नहीं कि भाई वो मेरी स्किल है, बस भाई मैं सीखा है, मेरे को आ गया है, कोई और बंदा भी सीखेगा तो उसको भी आ जाएगा। आई एम नॉट सम स्पेशल जी। This is not a skill. This can be learned. A skill that can be learned easily is never your skill. A skill that people learn from you and nobody else knows it, that is your skill, sir. So मेरे भाई, मैं तेरे को बताता हूँ ब्रो कि अगर तू अपनी ज़िंदगी में कल रूल नहीं कर पाएगा बट तेरे ऊपर लोग रूल करेंगे, उसकी वजह एक ही होगी भाई कि तू अपना जो है ना, अपना वर्क जो है, तू अपना सारा एनर्जी, अपना अटेंशन उस स्किल में लगाएगा जो ऑलरेडी सिस्टम के लिए वर्क करेगी। आई रिपीट ब्रो, अगर तू ब्रो इफ़ यू गोना बी अ पुलिस ऑफिसर, राइट, अभी तू वर्दी पहना होगा, you everybody will respect you, you know, like a lot of people will respect you, but they're not respecting you like you, why you nobody gives a fuck about you. Next day you're gonna take your uniform off, nobody even remember you. It means who hold the power? System, not you. किसी बड़े IIT giants के लिए वर्क करेगा, राइट, कंपनी किसी के लिए बड़े वर्क है, उनके लिए वर्क करेगा, tomorrow you're going to disappear. Do you think you won't be replaced tomorrow in the next couple of hours, in a couple of seconds? You would be, bro. Then who hold the power? System or you? System. Now you understand. Now my question is this. Do you think you would rule or you would get ruled? You can't rule, bhai. You don't have the resources. तूने अपनी जिंदगी के सारे रिसोर्सेज उस जगह लगाए जहां तू स्किल्स वो डेवलप कर रहा था जो तुझे कभी पावर दे ही ना। स्टीव जॉब्स, he built the system, bro. Elon Musk, he built the system. Nikola Tesla, bro, even though he had the great genius mind, but he didn't have the resources. That's why he got disqualified, discredited, erased. That's why you need to understand, you gotta be smart enough. How you can use the resources, how you can build the networks and shit. You cannot just say, bhai, main point B pe ja raha hu, but I'm not smart enough. Because if your shit is so good, then eventually people would kill you. Because they don't want any competition, right? So that's what exactly I'm saying, brother. You don't need to work for the system. You gotta create your own system. Zomato, look at this example. Look at the Zomato example. Bhai, जो वो फूड डिलीवरी करते हैं उनका क्या टैलेंट है? व्हाट एग्जैक्टली द टैलेंट दे हैव? व्हाट इज देयर स्किल? बाइक चलाना? ओके, या दिस। अब बता, इस इंडिया में कितने लोग बाइक नहीं चलाते यार? जीपीएस पे फोन पे वो देखना भाई लोकेशन क्या है बंदे की, बता कितने नहीं देख पाते यार? अब बता कि वो हाथ से ना वो जो ऑर्डर है वो ऐसे देना, सर जी टेक इट, थैंक यू। हाउ मेनी पीपल नॉट गोइंग टू हैव दैट स्किल? भाई बंदा पैदा ही वैसे हो जाएगा ब्रो। दिस इज नॉट अ स्किल. This is not a skill. This can be learned. A skill that can be learned easily is never your skill. A skill that people learn from you and nobody else knows it, that is your skill, sir. That is something yours. That is your. Everything else is not yours. You think, bro, I know this coding, I know this shit. Okay, yeah. How many people you think don't know? Now look at it, bro. Where do you stand? Where do you stand? If a lot of people can actually learn that thing, it means they can easily replace you. So don't fucking say कि भाई मेरे पास ये skills है, कोई नहीं हो नहीं सकता. How many doctors you see? How many doctors you see? How many genius doctors there are? Like there are ones जो भाई जो top पे होता है ना doctor, they build their own institution, they build their own hospitals. Because now they say, fuck it, a lot of money. Now they are one of the G. Nobody can replace them. You see that? A big doctor होते हैं, normal doctor. Then they are like some absolute geniuses. They have absolute whole control. They have a great experience, great history. And patients भाई अगर वो जंगल में बैठा होगा ना, तपस्या कर रहा होगा, patient वहाँ जाएंगे bro, Mount Everest पे चढ़ाई करके जाएंगे. Doctors are, we need you, help us. क्योंकि that's specific genius वो उसी डॉक्टर के पास है. He has that experience, he has that key. That's why people would hunt that doctor all the way to the Mount Everest.
बट एक नॉर्मल से डॉक्टर तू देख ले ब्रो, normal, there are certain, they are absolute genius, they're like boom, you get it, they're like wow. And there are some like, yeah, normal, yeah, okay, fuck it, he gave me the same medicine. Yes, he doesn't have his own fucking new way. Yeah, very standard way. I mean, yeah, but you gotta unlock the new way. So that's why there are certain people that are like, gee, if they're gonna create anything, they can easily make money, they can easily make their own system. And you can get a tons of example from the Google itself. And also bro, I want to let you know कि भाई तेरे पास तो अगर अपनी skills पे work करेगा ना, और skills अगर तू system के लिए work कर रहा है, right, अगर तू system के लिए work कर रहा है, फिर उस डॉक्टर की तरह बन, समझ रहा है? तू पहाड़ पे जाएगा तपस्या करने, माउंट एवरेस्ट पे, ठंड जो भी है, आप सोच ले यार, सोच यार, तपस्या कर रहा है ना यार वो, ये मत सोच कि भाई उसको ऑक्सीजन चाहिए, छोड़, नहीं चाहिए उसको। अगर तेरी स्किल्स ऐसी है ना भाई उस सिस्टम में, वो सिस्टम पूरा तेरे से फंक्शन कर रहा है, देन यू होल्ड द पावर, ऑलराइट, देन यू होल्ड द पावर। क्योंकि उस डॉक्टर के पास सिर्फ वो पेशेंट नहीं जाएंगे, सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे वुड गो टू द डॉक्टर बिकॉज दे नो ही होल्ड द पावर, ही कैन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। विदाउट हिम, लाइक देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स इन माई एरिया, क्योंकि वहाँ एक जी डॉक्टर होता है और हॉस्पिटल एब्सोल्युटली नथिंग इफ दैट डॉक्टर वुड बी गॉन। You get it? So that's what I'm saying, brother. If you really want to work for the system, then you need to understand it कि भाई उस skill को ना 100x कर दे, because कोई और बंदा compete ही नहीं कर पाए। But what I would suggest you, bro, create your own system. Because if you have your own system, then eventually you're gonna bring the capital. You are the value. You hold all the power. Nobody else hold all the power. Focus on your shit, like develop new things, innovate bro, create inventions bhai, inventions, suna hai na naam kya hota hai, inventions. So that's all you think is we invented zero? No, that's not. I mean, that happened 1500 years ago. 2025, we Indians are not inventing anything. Why? A lot of people are not, भाई रिस्क माइंड ही नहीं है, रिस्क वाला खत्म हो गया भाई, रिस्क नहीं लेने का है। आई वांट टू वर्क फॉर द जॉब, आई वांट टू वर्क फॉर द सिस्टम, आई वांट दैट सैलरी सो आई वुड फील स्टेबल। व्हाट इज इट? यू कैन नेवर रूल। ही लुक एट द अंबानी ब्रो, ही बिल्ट हिज ओन सिस्टम, all the other giants, billionaire giants, everybody is on the top. Are they working in this job or something? There are people that are working for them. They built a system by, उन्होंने वो ecosystem build कर दिया, and now people come and they're like, yeah, work, we're gonna get the money. That's why you're not there where you should, because you haven't created the system. You gotta create the system by your own skills, and once it's up there, everybody gonna come to you, bro. Then you would rule. भाई। अभी तू सिर्फ तेरे पे लोग रूल करेंगे ब्रो, अभी तेरे पे सिस्टम रूल करेगा ब्रो। सो अभी जो है ना, अपनी एनर्जी, अपना फोकस जो है ना भाई, अपने स्किल्स के ऊपर लगा। अगर तेरी स्किल्स दूसरा बंदा भी सीख सकता है तो वो तेरी स्किल्स है ही नहीं भाई। मैं बोलता हूँ कि ब्रो उसको बोलो नहीं कि भाई वो मेरी स्किल है, बस भाई मैं सीखा है, मेरे को आ गया है, कोई और बंदा भी सीखेगा तो उसको भी आ जाएगा। आई एम नॉट सम स्पेशल जी। हाँ, अगर तू जो स्किल सीखा है, तू इतना एडवांस सीखा है कि भाई अगला बंदा नहीं सीख पाएगा, देन आई वुड कॉल यू दैट इज योर स्किल, दैट इज समथिंग बिलोंग्स टू यू। बट इफ एनीबडी कैन रिप्लेस यू, देन दैट इज नॉट योर, एंड यू आर इजिली रिप्लेसेबल। दैट मीन यू कैन नेवर बी अ मिलियनर, नेवर बी अ बिलियनर, you would always be in a job, this sort of culture, you would always stay in this food chain, and you always struggle. You would go and disappear tomorrow, the company, the system would replace you. Then tell me bro, what sort of skills you have? भाई तू और कुछ नहीं भाई, फिजिकल लेबर से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है तू, that's it, just a little bit mind. That is the truth. So there are big examples, those who created the system, they rule, and they are easily billionaire. In India, I would say bro, you can be anything very soon, because the India is on a developing mode. So you can create, you can organize a lot of things, you can understand the problem, and boom, you would be up there. Bhai, look at it. Zomato is such a normal thing, you get it? Like I think he might have copied it from the Uber Eats. He put it in India, now he's there. He's here, fucking billionaire. Crazy bhai, crazy. That's the simplest idea भाई। तू गाड़ी चला, मैं इको सिस्टम में एक पूरा सिस्टम बनाता हूँ, तू उसके गाड़ी चलाओ, तू खाना दे, और खाना रेस्टोरेंट भी खुद के नहीं भाई। He's a billionaire. You gotta understand, you gotta use this thing भाई। हाथों को यूज़ कम कर, you know, it's not like कि भाई मेरे को ना चाकू घुसाने लोगों पे, no. But again, you have to
तेरे को अपने आप को डिफेंड करना आना चाहिए ब्रो, दैट इज़ 100% ट्रू। बट इट डजंट मीन कि तू बस डिफेंड कराने ही मतलब तू सिर्फ पूरी टाइम जिंदगी अपना बॉडी बनाया है, बट कल को देखे भाई तेरा कोई एनिमी नहीं है, तू बचाए किसके लिए भाई? तेरे से लड़ेंगे क्यों लोग? तू तो थ्रेट है ही नहीं ना भाई, तेरे एनिमी नहीं है, क्योंकि तू तो साला वही है ना भाई। यार ठीक है, बॉडी चल साइडर ब्रो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर? How would you think you would develop enemies? How would you think you would have enemies? You won't have enemies if you're not doing anything monumentally great, bro. If you're just like normal shit, a normal average guy, you think you would have enemies? Oh, bro, I would post some stories. Yo, mere to bahut zyada enemies hai, bro. Nobody gives a fuck about you. You think Ambani is your enemy? The time Ambani is your enemy, I would say, bro, you are fucking doing something. Anybody is your society is your enemy, you're doing something. In your family, nobody is your enemy. Fuck off, you're not doing anything. Because, bhai, दुश्मन किसके होते हैं ब्रो? एनिमीज कहां से आते हैं? जब उनको लगता है कि भाई थ्रेट हो रहा है, अपना सिस्टम थोड़ा कोलैप्स हो जाएगा अगर ये थोड़ा ना ऊपर आते रहा, तो क्या कर लेगा ब्रो फिर? जस्ट थिंकिंग दैट या यू हैव अ ग्रेट फिजिक, रिस्पेक्ट, बट व्हाट एल्स? व्हाट इज योर स्किल? कोई बंदा और जाएगा जिम में वर्कआउट करके सेम डाइट प्लान करके वो बॉडी बना सकता है? नहीं, they can do it, right? So I mean, this is something anybody can learn, and a huge respect. Not everybody is like 100% कि भाई I want to do it. Some people are fucking lazy, but this is, I respect you for your physique. This is easily replaceable. भाई कल को डाइट खत्म होगी, तेरे पास जिम के लिए पैसे नहीं होंगे, तेरी बॉडी खत्म हो जाएगी ब्रो। सो वो भी सोचना है यार, तेरी स्किल्स, तेरा सिस्टम, तेरे को वो सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे लोग आए वर्क करने। देयर आर 100 थिंग्स, गूगल कर कि भाई व्हाट आर द थिंग्स इन इंडिया वी नॉट हैविंग, एंड लाइक गूगल कर वेस्ट कंट्रीज में क्या क्या है और इंडिया में क्या क्या नहीं है, देन इवेंचुअली यू कैन उसको भाई सब्स्टिट्यूट कर, अपना आइडिया अपना नाम दे और बस सिस्टम बना यार। यू कैन मेक मनी ब्रो। जब तेरा सिस्टम होगा ना भाई, तू रूल करेगा। जब किसी और का सिस्टम होगा वो तुझ पर रूल करेंगे। सो कल को अगर दुखी हुआ ना तू, तो उसका कारण तू होगा भाई। अगर आज भी दुखी है तो इसका कारण भी तू ही है, बट कल का दुख जो है ना अभी तेरे हाथ में, क्योंकि तू वीडियो देखा। सो दैट्स इट ब्रदर, टेक केयर एंड फोकस ऑन दैट थिंग, फोकस